Hello friends, today I am starting with the working capital requirement problem. Please refer to assignment of working capital and question number 2. The question number 2 is the pro forma cost sheet of the company is given and the elements of the cost are given and the amount is given. Raw material is rupees 80, direct wages is rupees 30, overheads is rupees 60. The total cost is rupees 170, and if we add the profit of 30 rupees, we are getting the selling price. Everything is given in the question itself. Question number 2 of your working capital practical assignment. You already have that, and there are some other information which are given. Raw material is given is in stock on an average for 1 month. Material is given for 1.5 months, and 50% completion of labor and overhead, and in respect of material it is 100% completion. Third part is the finished goods are in the stock on the average for 1 month. D part, credit allowed by the supplier is 1 month. E part, credit allowed to debtors is 2 months. F part, time lag in payment of wages is 1.5 weeks. 1.5 weeks. And time lag in the payment of overhead is 1 month. 1/4 of the output is sold against cash. इसका मतलब हुआ 1/4 कैश में बेचा है, तो 75% आपने क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है ना। तो जो डेटर्स वाला पॉइंट होगा वहां पे 75% ही लेना है हमने, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 20% आपने कैश में बेचा है तो 80% डेटर्स को आपने क्रेडिट पे बेचा है. एंड द कैश इन हैंड एंड एट बैंक आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹25,000 and the total level of activity is 1,04,000 unit of production. 4 weeks is equal to 1 month. Now I am starting with the answer. You have to calculate the net working capital requirement. This is the sheet, statement of working capital. The first item is A part, current assets. Second item is B part, current liabilities. First we will finish with the current assets. In current assets we have stock, raw material, finished goods, debtors and cash. So in raw material 1,04,000 divided by 52 weeks into raw material cost is given ₹80 and raw material cost is given ₹80 and 1 month time is given. So 1 month is equal to 4 weeks. Multiply by 4, we are getting 6,40,000. This is for raw material. 1,04,000 divided by 52 weeks into 80. 80 is the cost which is given. Multiply by 4. 4 means 1 month. 1 month is equal to 4 weeks. It's a very easy question. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. Just you have to be very careful with the calculation. Now second point is वर्क इन प्रोग्रेस. एक रॉ मटेरियल हो गया, एक फिनिश गुड्स हो गया और एक सेमी फिनिश गुड्स हो गए, ठीक है ना. तो वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगा, ओवरहेड भी आएगा. तो इन रॉ मटेरियल 104,000 डिवाइडेड बाय 52, ये तो करना ही करना है. मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू हाउ मेनी वीक्स, हाफ मंथ. हाफ मंथ का मतलब क्या हुआ? एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, हाफ मंथ का मतलब 2 वीक्स. एंड रॉ मटेरियल का जो है इट इज 100% कंप्लीशन. तो ये पूरे का पूरा आएगा हमारा. दिस अमाउंट कम्स टू 3,20,000. सेम विद डायरेक्ट लेबर 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52. द रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर इज गिवन ₹30. Half month means 2 weeks and completion is given 50%. तो इसको
5 से मल्टीप्लाई कर देना, इट विल कम टू 60,000. सेम विद ओवरहेड, 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू ओवरहेड का रेट दिया हुआ है 60 रुपीज. हाफ मंथ मीन्स 2 weeks, 50% completion time, which comes to 1,20,000. Now come to the finished goods. Again 1,04,000 divided by 52. 52 is the weeks. 1 month is equal to 4 weeks. तो approximate हम 52 weeks ही लेंगे. 1 year is equal to 52 weeks. Multiply by finished goods. Finished goods में we will take the total cost. We will not take selling price. Selling price include profits. करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में कभी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता. वी विल टेक 170 एज द कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स का दिया हुआ है 1 month. 1 month इज इक्वल टू 4 weeks. दिस अमाउंट्स टू 13,60,000. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डेटर्स. 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52. डेटर्स मतलब जिनको हमने माल बेचा है, बेचा हमने सेलिंग प्राइस पे है, लेकिन हम प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते हैं. वी विल ओनली इंक्लूड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. 170 इंटू हाउ मेनी वीक्स? डेटर्स 2 months. 2 months मतलब 8 weeks. 1 month is equal to 4 weeks. 2 weeks is equal to 8 weeks. This is, and one more thing, it is written that your 1/4 of the output is sold against cash. अगर 100 में से 1/4 25% कैश पे गई है तो क्रेडिट पे आपने 75 दिया है, तो आप इसका 75% लेंगे, which amounts to 20,40,000. Cash is given, which is given in the question, 25,000. The total cash or total current asset is amounting to 45,65,000. So this is the total current asset side. ठीक है ना? Raw material, work in progress में again raw material, direct labor, overheads, finished goods. ठीक है, ये आपका पूरा स्टॉक दिखाएगा. Then debtors 75% debtors हैं, 25% कैश में बेचा है, तो इसका ये जो जितना भी कैलकुलेट करेंगे आप, इसका 75% will come to 20,40,000 and cash is already given, so the total current asset is 45,65,000. Now let us come to the current liability side. Let me adjust the camera. So under current liabilities there are 3 items. First is the creditors जिनसे हमने माल लिया है. Second is wages जिनसे हमने काम लिया है उनको हमने wages देनी है. Third is the overhead expenses. तो 1,04,000 divided by 52 into जिनसे हमने माल लिया है. क्या लिया हमने? We have taken raw material. तो raw material का रेट आ जाएगा, ठीक है, into हमने कितना लेना है creditors से 1 month. 1 month means 4 weeks. This amounts come to 6,40,000. Again wages 1,04,000 divided by 52. wages कितना दिया है? 30 rupees. और आपको क्या दिया हुआ है? wages पे लैग है आपका 1.5 weeks. 1.5 weeks. This amounts to 90,000. Again overheads 1,04,000 divided by 52 into overheads, it is ₹60, and overheads का दिया हुआ 1 month means multiply by 4. This amounts to 4,80,000. Now we will add all these 3 items. The total current liability amounts to 12,10,000. और इसको working capital requirement होगी total current asset minus total current liabilities. ठीक है ना, ये आपका हो गया 45,65,000 minus 12,10,000. ठीक है ना. Now the net working capital requirement is equal to 33,55,000.
दिस इज योर आंसर. These are very easy question. सारे क्वेश्चन मिलते जुलते ऐसे आएंगे, सिर्फ फिगर्स चेंज होंगी. काइंडली डोंट मिस दिस क्वेश्चन. ये फ्री के नंबर है. प्लीज काइंडली डू इट. जस्ट रिमेंबर वन मेन थिंग. In second question, part number H, 1/4 of the output is sold against cash. जो कैश है आपका वो क्या कहते हैं, आपका 25% ही है, तो 75% आपने डेटर्स को दिया है. तो बस इसका ध्यान रखना. सपोज क्वेश्चन में आता है 20% इज अगेंस्ट कैश, तो 80% आपका डेटर्स के अगेंस्ट हो जाएगा. ठीक है, जो भी कैलकुलेट करोगे उसको मल्टीप्लाई बाय 0.80 कर देना, आपका डेटर्स की फिगर आ जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.